Good morning, everyone. So, how's my pacha party today? I know that you must be desperately waiting for a guidance for chapter number one. So, I welcome all of you in this session of English Reader. So, प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बैठ जाओ और सीख लो इस चैप्टर नंबर वन में हम क्या लेकर आए हैं. Let's see. सबसे पहले तो I welcome you all in this lovely interactive session. चाहे आप मुझे देख सकते हैं मैं आपको नहीं, but then I can feel the vibe that my lovely children are with me. And so I welcome you wholeheartedly in this session. Let's begin the chapter. The, Before we start the chapter, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ. क्विज मान लो. एक बात बताओ, what exactly excites you a lot? I mean, when I was in my class one, when I was a first class student, I desperately waited for that one day in my year, the whole year. Do you know what was that? इनफैक्ट आप मुझे बताएं कि वो कौन सा एक दिन है जो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हो पूरे साल. Tick tick one, tick tick two, tick tick three. Answer is your birthday. क्यों? बिकॉज बर्थडे एक ऐसा टाइम होता है when you are full of energy. आपको इंतजार होता है, you wait for the whole year that this is what I'm going to get. My mama is going to give this. My granny is going to give this. I'm going to demand this from my papa. So everybody is excited and so are you. So today's chapter is about family, about birthday, and about the gifts. I hope you can see this lovely picture here, and it is about the whole family. Family दादू दादी के बिना incomplete है, siblings and mama and papa. So when you have so many people in your family, you get so many gifts and blessings, hugs. So आज का हमारा ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों है hugs are enough. ये चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग और लर्निंग मैसेज कन्वे करता है. मगर पहले बात करें टाइटल की. Hugs are enough. Hugs means इतने enough है. और do you know what this story is? This story talks about the magic of happiness. आपके बर्थडे पर आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कब होता है? I mean, when do you feel super excited? When do you feel that this is my day? You feel like prince, you feel like princess. बर्थडे ना. और उस बर्थडे का मैजिक क्या होगा? उस बर्थडे का मैजिक होगा जब आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे. सो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? प्यार एंड क्रिएटिविटी. देखो, मार्केट से गिफ्ट लाकर देना इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट देन if you plan something for your loved ones or your loved one plans something for you, they think out of the box and they come out with certain ideas. That's called creativity. और जब गिफ्ट क्रिएटिव होके आपको प्रेजेंट किया जाता है तो उसका मजा ही कुछ और है. सो ये स्टोरी एक ममा के बर्थडे की कहानी है जिसमें एक डॉटर अपनी ममा को हैप्पीनेस देने के लिए पूरी फैमिली से गिफ्ट वाउचर्स बनवाती है. वाउचर्स मीन्स हम मान लेते हैं अ स्लिप और मामा वो स्लिप देगी और उसको वो गिफ्ट मिलेगा. सो डोंट यू थिंक इट इज वेरी क्रिएटिव कि कैसे पूरी फैमिली ने मिलकर सोचा और एक लेडी का बर्थडे स्पेशल बनाया. So it is about the bond of family, the love and the creativity within the family while celebrating special occasions. कई सारे देखिए फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल्स के अलावा हम सबका बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये भी तो स्पेशल ओकेजन है. किसी भी इंसान को अगर आपको बहुत स्पेशल फील कराना है, I mean, you love that person a lot. So what do?
You make them happy. How do you make them happy? By gifting something that they have never thought. So that's what we're going to study in the chapter, Hugs Are Enough. So let's read the story, let's understand line by line, and I'm going to explain you the meaning so that you can easily get to the motive and the concept of the story. So let's begin. Let's start the story. This story is about a little girl named Kyra. सो कहानी में जो प्रोटैगनिस्ट है मींस जो बच्ची है मेन रोल में शी इज कायरा who wants to plan a special birthday surprise for her mother. वो अपनी मम्मा के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती है. That's what I told you. Kyra asked her family for ideas on what to give Mama as a birthday gift. Yeah, she's not that matured enough. So what she's doing, she's thinking and she wants to give something to her mother. वो सोचती है ये करूं वो करूं सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करती है which means we are knitted together when we are thinking about something. तो ये भी तो हमें जोड़ के रखे हुए हैं. But she wonders if each suggestion is special enough. But then she thinks, uh, ye na, So she keeps on pondering over, and with the help of her family, again, the love, togetherness, and the companionship. Family के साथ they come up with a creative idea to make vouchers for different gifts. वो क्या करती है? सारे फैमिली मेंबर्स के साथ आकर सोचती है और आइडिया आता है कि क्यों ना गिफ्ट के वाउचर्स बनाए जाएं, वो मामा को प्रेजेंट किए जाएं, and that would surely going to super excite the mom. So on Mama's birthday, Kyra gives Mama these vouchers. उन्होंने बहुत पहले से ही प्लान किया, and then on that D-Day, on her birthday, they gave the vouchers to Mama, and Mama receives wonderful presents from every family member. I mean, not only Mama, the entire family was so happy because they had planned something for Mama. So जब सबने दिया, so वो happiness उसने पूरी family को join कर लिया. Means एकदम closely connect करने के लिए, मतलब how they closely get connected to each other. So the story teaches us about pyar, creativity. That's what I told you at the starting of the chapter, that it is about love. It is about creativity within a family. How creative you are to make your loved one happy on their day or birthday. So let's read the story, understand if there are any difficult words in the story. आइए मेरे साथ और रीड कर लीजिए, सीख लीजिए और आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान बना दूंगी मैं. It was cold month of January. सर्दी का महीना और ठंडी और नो पसीना. See, सर्दी में this also fell down. Give me 1 minute. Okay. So, सर्दी का, it was the cold month of January. Kyra was still in her bed. आप भी सोचो, सर्दियां हैं और किसका मन करता है बेड से निकलने का? किसी का भी नहीं. मामा थोड़ी देर, मामा और थोड़ी देर. The clock struck 7. Morning, 7 बज गए. Kyra jumped out of the bed. Oh, I'm late. And she jumps. It was Mama's birthday on coming Friday. See, the child is super excited, so energetic because she wants to celebrate her Mama's birthday. कब है Mama का birthday? A quiz? Knock, tick, tick 1, tick, tick 2, tick, tick 3. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. When? Friday. She ran to Papa. Now, early morning, she went to her Papa's room and she wanted to know and discuss with her Papa, Papa, Mama की birthday में क्या
करेंगे? What can I give mama on her birthday? पापा समझ नहीं आ रहा मम्मा के बर्थडे पे क्या करेंगे? Something really special. Now Kyra was puzzled. क्या 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 कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, and that's why she's confused. The word is very interesting. Puzzled means confused. What? So flowers, she likes flowers. Now papa is coming up with the idea, and papa कह रहे हैं flowers, मम्मा को flowers बहुत अच्छे लगते हैं. But is that special enough? Now she starts wondering. Wondering is again a very good word, which means she starts thinking, क्या flowers इतने special gift होगा क्या? But paint her a picture. Now दादी comes into picture. अब दादी आती है और दादी कहती है, हमें लगता है बेटा पेंट हर पिक्चर, उनकी पिक्चर को पेंट करा दो तो मम्मी खुश होंगी. Dadi tells her, she says, she loves to draw. She loves what you draw, Kyra. मतलब now दादी saying, बेटा जो तुम ड्रॉ करती हो वो मम्मा को पसंद है. I mean, she loves what you draw, Kyra. So the second plan is picture. Again, a magic quiz. The first idea was yes, yeah, flowers. And the second idea was given by Dadi. And what was that? Tell me fast. Yes, it was to draw a picture. I hope this is clear enough. So, is my bacha party full of energy and zeal? आइए, let's complete the chapter. But is that special enough, Dadi? Again, she starts thinking. अभी wondered कराया था ना word. And the second meaning is she starts thinking. So वो फिर सोचती है, क्या ये special होगा? I mean, क्या ये इतना special होगा कि मेरी मम्मा को अच्छा लगे? She's thinking whether should I do this or should I go with this or not. Let's bake a cake, I'll help you, laughs Chachi. Now Chachi is saying, I have an idea. Why don't we bake a cake for her? I mean, you help me and we'll say you have done it with my help. Now Chachi is coming up with the idea. See, family बड़ी है, प्यार बड़ा है और super excitement है सभी के बीच में. We can make cupcakes together. She loves fruit muffins. Cupcakes, muffins सभी ने खाए होंगे, नहीं खाए? अपने अपने बर्थडेज पे प्लान. So that's what Chachi is saying. हम ऐसा करते हैं, हम ना cupcakes बना देते हैं, muffins बनाते हैं, और मुझे पता है, I know very well your mama will surely going to like it. But is that special enough? She starts wondering again. She starts thinking, she starts pondering over, she starts again, she goes into that deep thought, Mama ko acha lagega kya? But make a heart-shaped card for her and paste yours and Papa's picture in it. That's what I did for my mom, Kyra's cousin, Ibhan tells her. Now Kyra's cousin comes into picture. वो भी आ जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी मम्मा के लिए एक हार्ट शेप कार्ड बनाना चाहिए. All my बच्चा पार्टी out there, don't you do the same? मेरा बेटा और मेरी बेटी तो यही करती है, सुपर एक्साइटेड होते हैं और मेरे बर्थडे से पहले मुझे छुपा छुपा के they make card and I know, but then I don't tell them. That's how you must be doing it with your parents, your grandparents or your chachu chachi. So she is getting a next idea and she says, she's thinking, क्योंकि उसके cousin ने क्या आइडिया दिया, ऐसा करो एक हार्ट शेप कार्ड बनाओ जिसमें आपके पापा और आपकी पिक्चर पेस्ट करो एंड यू कैन राइट सम गुड वर्ड्स. और मैंने भी ऐसा किया था अपनी मम्मा के बर्थडे पर, हाँ मैंने भी किया था, तो आप ऐसा कर लो बेब तो आपको भी मजा आएगा, आपकी मम्मा वुड बी हैप्पी. कायरा, बट इज दैट स्पेशल इनफ? कायरा अगेन स्टार्ट्स थिंकिंग, क्या ये इतना स्पेशल होगा?
बच्चा अपने मम्मा के लिए सबसे बेस्ट करना चाहता है. I mean, she wants to see the smile on her face. And that's what every child wants. Children, if you want to give something special on your mama's birthday, do something that makes her happy, because that's what the girl is doing. She's planning things and she's thinking, what might make my mom happy? And ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं. तो इतनी सारी फैमिली, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स, इतने सारे फैमिली मेंबर्स सब इकट्ठा हो गए और सब उस बच्ची को आइडियाज दे रहे हैं. This is what I did for mom. Now he says, क्या ये इतना स्पेशल होगा? कायरा wonders again. कायरा फिर सोचती है, बहुत सोचती है कि which idea is special, Dadu? Now she goes and asks her Dadu, Dadu, कौन सा idea super best है? बोलो ना. Dadu says, all of them. Sorry, kids, sorry. It's just the way we are going to present it. But how can I give her all of them? Kyra wonders. Now Kyra starts thinking. ये सारे gifts कैसे दूँ? I mean, how can I present her all the gifts? Why not make vouchers with all of these special things, one for each day of the week? Now her birthday is on Friday. So let's plan a voucher और हर दिन स्पेशल बनाते हैं मम्मा के बर्थडे से पहले. That was a brilliant idea, lovely children. I mean, I am planning to make somebody happy on his or her birthday like this. आप भी जरूर plan करना. That's what. See, why not make vouchers with the whole family is sitting? See how happy and excited they are. तो कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, वाउचर्स बना लेते हैं और इन सारी स्पेशल चीजों को एक एक दिन करके मम्मा को प्रेजेंट कर देंगे. नाउ अगेन कायरा इज पजल्ड. व्हाट्स अ वाउचर? छोटी बच्ची है भाई, शी डजंट नो व्हाट्स अ वाउचर. सो let's understand what does the word voucher means. I have already told you, but chapter में अभी आया है, and my बच्चा party should know what is exact meaning of the word voucher. आपको भी देना है और आपको किसी से लेना भी है नेक्स्ट बर्थडे पर, और ये प्लान शेयर करना है, because that is what you're learning in this chapter. Learning becomes interesting. You learn double when you utilize that idea. So next बार इस आइडिया को यूटिलाइज करना मत भूलना. So let's understand कि वाउचर क्या है. Dadu starts laughing because she's so young, she doesn't know what a voucher is. Do you remember? Chachu gave you a voucher for a bookshop on your last birthday. Now Dadu is giving an example. Dadu से समझा रहे हैं with an example. याद है बेटा? आपको याद है बेटा? आपके पिछले बर्थडे पर चाचू ने एक स्लिप सा दिया था. Now she is recollecting, सोच रही है और क्या हंसती है. And I gave the vouchers to the shopkeeper and picked 3 books. कहती yeah, I got that. और मैंने वो voucher से 3 books ली थी. So now we've understood what are vouchers? A slip where you can encash that slip, means you can give that and you can get what is there on that voucher. कहती है कायरा smile. A unicorn coloring book. So how many books she got? Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. Yes, you guessed it right, 3. कौन सी books? A unicorn coloring book, a story book, and a picture book. I know all my lovely children out there, they love picture and coloring book. खूब सारा scribble करना, बहुत सारा color करना. You love that. Am I right? That's what excites a child. So exactly, Dadu starts laughing that yes, those were the 3 books that you got. We'll make a paper vouchers and write names of all the gifts she will get from us on them. So Dadu says, ऐसा करते हैं, वो सारे वाउचर्स जो हम देने वाले हैं उसे उस स्लिप पे बना लेते हैं. One by one we are going to give that voucher and she will get those gifts. When mama gives us the vouchers, she will get the gift. हम मामा को वाउचर्स देंगे
और जब वो हमें वाउचर वापस करेगी हम उसको गिफ्ट देंगे, सो शी विल गेट द गिफ्ट इन रिटर्न। आइडिया अच्छा है ना? नेक्स्ट टाइम सोचना नहीं, यूज दिस आइडिया। भाई मैं तो यूज करने वाली हूँ। आई मीन आई एम श्योरली गोइंग टू यूज दिस आइडिया फॉर श्योर, एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू डू द सेम. Flowers from Papa. So now let's see what all things Kyra and the family in totality have planned for Mama. So came Friday. फाइनली वो दिन आ गया जब पूरी फैमिली खुश है, क्योंकि वो अपनी द लेडी ऑफ द हाउस मीन्स मामा को उस बच्ची की स्पेशल फील कराने वाली हैं. So Kyra gave all the vouchers to Mama, and when Mama gave the vouchers, she got. Now Mama is very happy कि उनके इतने efforts से, मतलब वो इतनी मेहनत करती है अपनी फैमिली के लिए, तो फैमिली भी उन्हें कितना प्यार दे रही है. So what did she get? Flowers from Papa. Papa ने दिए flowers. A family photo from दादू दादी. Lovely gift, हाँ? एक family photo दादू दादी से. फ्रूट मफिन्स फ्रॉम चाची. चाची ने बनाए वो कपकेक्स या फ्रूट मफिन. मामा को वो भी बहुत पसंद है. मतलब सब कुछ जो मामा को पसंद था, दैट वाज सर्व टू हर ऑन हर बर्थडे. शॉपिंग वाउचर्स. चाचू ने दिए शॉपिंग वाउचर कि मम्मा कैन फील लाइक प्रिंसेस एंड शी कैन गो एंड शॉप व्हेनेवर एंड वेरेवर शी वांट्स. एंड अ ब्यूटीफुल कार्ड फ्रॉम द कजन इवन. और उनके चाचू चाची के बच्चे ने उन्हें क्या दिया? एक ब्यूटीफुल कार्ड. मामा वॉज सो हैप्पी. मतलब एक माँ को और क्या चाहिए? उनके बच्चे, उनकी फैमिली उसे प्यार करे और उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करे. She doesn't want money, she wants love. And when everybody adores you, that makes your day. Wonderful, she said. And she hugged everyone. Oh, thank you so much. Oh, thank you. Oh, you guys made my day. Mama इतनी खुश थी. Wonderful. Are there enough hugs? She smiled. And she smiled. Are these hugs enough? माने गले लगाना क्या ये इतना बहुत है? क्योंकि वो बहुत खुश थी. Can you see the picture, the lively picture? सब गिफ्ट कर रहे हैं. मामा इतनी खुश है. किसी भी बड़े गिफ्ट से बहुत अच्छे होते हैं ये छोटे छोटे प्यार से भरे. I mean, that helps you to get together with your family members. तो मामा ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? Again a magical question and I want you to answer. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. बोलो बोलो बोलो. Correct. Hugs. तभी तो यहाँ पे लिखा है, देखिए. Mama was very happy. Wonderful, she said, and hugged everyone. Let's see. So that's what the interesting chapter had stored in for you. I hope my Bacha Badi must have liked it. Thank you so much for listening and watching me so patiently. Thank you everyone. Next video देखना मत भूलिए, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, हम सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. Bye for now. God bless you all. Take care. See you soon. Bye bye.